Namaste, Masters. Good evening, Masters. We'll start our evening meditation. Just checking the mute button. Everything is fine. Okay, so let us begin. Everybody, sit down where you are, cross-legged. Raise your spine a little bit with a pillow. There was some discussion on the group. Somebody said they're falling asleep, and somebody said maybe remove the support. I would say no, don't do that. Keep the support because you need your spine to be straight always. And even Babaji shared that if you lift a little bit on the cushion, then your spine will stay straight. So just increase the intensity of your focus in your breathing, and it's a practice. You'll learn how to stay awake. तो मास्टर्स बैठ जाते हैं ध्यान में. बैठ जाइए पैरों को क्रॉस करके और पीठ सीधी. कुशन रख लीजिए नीचे. थोड़ा सा आपके कुशन रहेगा नीचे तो पीठ एकदम सीधी रहेगी. और बोला एकदम सीधी नहीं, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं तो 1 बजे का जो हैंड होता है ना, थोड़ा हल्का सा आगे बेंड होते हैं, एकदम सीधा नहीं. उससे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है एकदम सीधा होने में मणिपुर चक्र पे. तो रिलैक्स वे में स्ट्रेट स्पाइन करके बैठना है और सांसों पर ध्यान दीजिए. सांसों में आ जाइए. जब सांसों में आते हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वेकेशन पे जा रहे हैं. ऐसी खुशी आने लगनी चाहिए. दिन भर सोचते हैं, काम करते हैं, और जैसे ही एक आइडिया आता है, अच्छा आप सांसों में जाना है, तो मुस्कुरान के साथ, खुशी के साथ कि अब तो रिलैक्स होना है, अब तो फ्रीडम, आज़ादी, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए. सीरियस काम नहीं कर रहे हैं, हम रिलैक्स होने जा रहे हैं. सो नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ, masters, and have this feeling of joy. It's like, you're working whole day and so much stress builds up, and then you have to release. So this coming to breath is like a vacation. You're telling the mind, okay, now you don't have to be so active, just rest. And the joy should come. Oh, now we are just sitting. So sit with a smile and start focusing on the breath with a smile. Keep focusing. Breathe in circles. सांसों को गोले में लेते रहें. So we'll make 1 or 2 changes so that you feel better. So we will try to finish this meditation in 1 hour every day. And there was a suggestion which I kind of liked. So we may not do, maybe, let's see how much we can implement that. So we have morning sessions in which we have the channeling, and there's always some theme that comes there. So we could continue the wisdom on that theme in the evening, whatever that theme is. That way the wisdom will get more grounded. So we can do that. And
I will try, but we may not summarize it totally because there's a lot of information that comes. But we could do some kind of a theme so that you get most of the gist of what was shared. And healing happens in two different ways. One is energy with chakras, which comes from the soul directly to the body. Chakras are places between where soul and body meet. And as you know, goddesses have shared that too much mind thinking, emoting, that is like sand in between the chakras spinning together. They can't spin together. So energy works best when the mind is silent. That's why we do Devi Kriya. And it's one type of healing, very powerful healing. Blessed to have that in the morning. And then there is healing of the mind itself, because mind is that sand between the chakras, right? So we try to heal the mind, and that happens a lot with wisdom, which we will do in the evening sessions. In the evening sessions will be circular breathing. Always you have to get into this practice of being a witness to the circular breathing, which slowly will become smaller circles. It's not that you are consciously always making the circles. It begins with circles, and then it becomes small circles, and then it becomes just energy. It's more gentle in the evening. And in that we'll share the wisdom. So you have to always maintain that breathing even when I'm talking. It's not that you have to pay attention, stop breathing, then again breathe. It's not like that. You're always in that breathing awareness like a witness, and you are listening. So this way, the morning theme can continue as some wisdom theme in the evening. And wisdom is about how the mind can get insights. How can it connect with the soul? We call this the unifying mind. I had a, the session yesterday was on that. How the mind can connect with the breath and the soul and the higher self. When mind does that, we call it unifying mind. It's unifying with higher levels of consciousness. This is coming in the next book. So now when I switch to Hindi, those of you who do not want to listen to it twice and who know both languages, but you can understand in both. So what you should do, if you've understood it fully, when I'm speaking in Hindi, just stay in your breath. Keep focusing on the breath. You don't have to pay so much attention on my words if you've understood in English. Just use the time to stay with your breath. Keep breathing as I'm speaking in Hindi. And then when I switch back to English, you can keep breathing, but now you can pay more attention to what is being spoken, so you can vary your attention on my words versus your own body. Switch back and forth. That way your breathing also will be felt more, So because we'll do both English, Hindi, and you don't have to become impatient. Just use the time for meditation. Just keep breathing while I'm speaking in Hindi. तो हम एक दो चेंजेस लाएंगे इसमें शाम के सेशन में. एक तो हम इसको 1 घंटे का ही ट्राई करेंगे, 1 घंटे में हो जाए, ताकि आपका सोने का टाइम सही रहे, आप 3 बजे उठ पाएँ. वो सब हो सकता है 3 4 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, मगर 1 घंटे का ही की कोशिश करेंगे.
और दूसरा एक सजेशन था कि इसमें थोड़ा सा इसको कनेक्ट करें, समरी करें इसकी, जो सुबह का सेशन होता है। तो वो एक अच्छा आइडिया है। पूरी समरी करना तो मुश्किल होता है क्योंकि बहुत चीज़ें आती हैं इन चैनलिंग्स में, बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, मगर उसका एक थीम बनता है। उस थीम को जारी रखते हुए हम एक ज्ञान की गहराइयों में जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ विजन दिखाए जा रहे होते हैं वहाँ विजन होते हैं। विजन में एनर्जी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, मगर वहाँ इतनी ज्ञान की बातें भी हो रही हैं, मगर इतना जोर उस पर नहीं दिया जा रहा है। जोर दिया जा रहा है ऊर्जा पे, एनर्जी पे, हीलिंग पे, जो हुआ जा रहा है। तो उसके पीछे भी जो विजडम है, जो ज्ञान है, उसको थोड़ा गहराई से शाम को अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो थीम बन रही है। और वो बहुत अच्छा एक तरह का कॉम्बिनेशन होगा। और तो ऐसा करेंगे अपन, ट्राई करेंगे ऐसा। अम, और आप, जब मैं हिंदी और इंग्लिश में स्विच हो रहा हूँ तो ऐसे कर सकते हैं कि जब, अगर आपको दोनों भाषाएं आती हैं, तो अगर आपको रेपिटेटिव लग रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, जब मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो आप अपनी सांसों में ज़्यादा आ जाएं, शरीर के अंदर महसूस करने लगें। शब्द आते जाएंगे, आने दें, उन पे इतना ध्यान ना दें। और वापस जब हिंदी में आऊँगा तो फिर थोड़ा शब्दों पे आ जाएं। इससे थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी कि कैसे सांसों में रहना है और विजडम भी सुनना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जिनको एक ही भाषा आती है, केवल हिंदी आती है, तो जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ वैसे भी आप उसको ज़्यादा फोकस ना करें, अपने बॉडी में, शरीर में आते जाएं। सारा सांसों का शाम का है ही ये, इस थीम पर, कि सांसों से जुड़ना है। सांसों से जुड़ने में सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। इसके बारे में मैंने कल ही बात करी थी। ये भी समझाया था कि एक खतरा होता है, डेंजर होता है सांसों से नहीं जुड़ने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन में चले जाएंगे, थिंकिंग में, तो सारी मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस, ये वो कई तरह की। तो एक तरह का माइंड सपोर्ट है ये, लाइफ सपोर्ट ही नहीं है सांसें। सांसें आपके दिमाग की रक्षा भी करता है। तो वो प्रैक्टिस अपने को सीखनी है। जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा उसमें अपने आप पे फोकस रखें, फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो भी रखें फोकस, और साक्षी भाव से सुनते रहें। तो इस तरह से अपन ये सेशन लीड करेंगे। तो अब बैठ जाइए, हल्की सी ब्रीदिंग पे अवेयरनेस रखिए और बैठ जाइए। पीठ सीधी, हल्की सी, थोड़ी थोड़ी सी आगे, और सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। रूट चक्रा से, पीठ से होते हुए क्राउन चक्रा थोड़ा एनर्जाइज हो रही है, और क्राउन से वापस मणिपुर और रूट चक्रा रिलैक्स हो रही है। तो ऐसे लेते रहें आगे के चक्रों में, हार्ट में, मणिपुर में, सेक्रल जो सेकंड चक्रा में, उधर से होते हुए रूट में जा रही है, पीछे से होते हुए रूट, और वो ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और क्राउन तक, हायर चक्रा से क्राउन तक।
और सर्कल एक स्मूथ सर्कल चलता रहे। इतना चक्रों पर इतना ध्यान नहीं देना है, देखना है कि सारे चक्र एक गोले में आप ले रहे हैं सांस, तो सारे चक्र एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, हार्मनी पैदा हो रही है। कई बार हम सर्कल हमारा घूमता है, सुबह भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और सर्कल में जो बैठे होते हैं उनकी एनर्जी मिलने लगती है। तो ऐसे ही इस सर्कल में, सांसों के सर्कल में अलग अलग चक्रों को ऐसे नहीं महसूस करना है, सब चक्रों की एनर्जी मिलते जा रही है एक दूसरे से। और ज़्यादा सोच में मत आइए, खाली ब्रीदिंग सर्कल्स में लेनी है और सोच को जाने दीजिए। थोड़ी सी अवेयरनेस है कि चक्रों में भी ब्रेथ जा रही है, मगर उसके बारे में सोचना नहीं है। बस गोलों में सांस में पिघलते जाइए, सांस बन जाइए। सांस जो शरीर ले रहा है, आप नहीं ले रहे। इन सांसों में अपने आप को पिघला देना है। फिर फिर केवल एक अवेयरनेस रह जाती है। उसको साक्षी भी नहीं कह सकते, एक साक्षीपन रह जाता है। जैसे कह सकते हैं विटनेस भी नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई भी नहीं है, खाली विटनेसिंग हो रही है। विटनेस और विटनेसिंग में भी फर्क है। बस विटनेसिंग हो रही है, देखने वाला कोई नहीं है, बस दिख रहा है। जो देखने वाला है वो ही तो मर्ज हो रहा है, वो ही तो पिघलते जा रहा है। यही अद्भुत बात है कि कॉन्शियसनेस में कोई भी देखने वाला भी नहीं चाहिए। केवल अवेयरनेस दिखती रहती है, अपने आप ही दिखता रहता है। So keep breathing in circles. Become the breath. Become the body. Keep dissolving in the breath in circles from the root to the crown, through the back, energizing, then relaxing in the front to the root. In breath is a little more energizing, out breath is very relaxing. Become these breaths, become the body. You are just being a witness, but more than witness, it's more as if just witnessing is happening. Imagine as if witnessing is happening without any witness. Nobody is watching, and yet watching is happening.
Because that who is watching is dissolving, is becoming the breath, becoming the body. Then there is no one left. One does not need somebody to watch. There is nobody. Only watching is happening, witnessing is happening. The watcher is also, the witness is also dissolving. In this way, just become the breath. And as you keep completely focusing on the circles, no gap, as you do that completely, the breath will start settling down. You will feel as if the body is taking the breath and only witnessing is happening. That will energize you more and even relax you more. Even the energizing will have a sense of emptiness. It's just occurring on its own. ऐसी सांसें लेते रहिए पूरे समर्पण के साथ। सांसों में पिघलते जाइए। सांसें शरीर बनते जाइए। एकदम सरेंडर समर्पण कर देंगे तो सांसें सेटल होती जाएंगी। एकदम रिलैक्सेशन आने लगेगा और एनर्जाइज शक्ति भी आएगी, मगर जैसे कि उसमें एक शून्यता है। इस तरह से सांसें लेते रहें। कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि जब शरीर सांस लेने लगता है तो एक सेंसेशन अपने आप आता है,
मणिपुर से थोड़ा मणिपुर के नीचे से अपने आप ही सांस आ रही है, जा रही है। क्योंकि वहाँ पर डायफ्राम होता है, थोड़ा सा वो सेंसेशन को महसूस करना है। और ऐसा नहीं कि केवल मणिपुर से आ रही है। इन सांसों के गोलों में चक्र एक हो जाते हैं, तो ऐसा है जैसे कि पहले 3 चक्र एक हो गए हैं और उस एकता से आप ले रहे हैं सांस। और भी गहराई में उतरेंगे तो आपकी स्किन भी सांस ले रही है, उसको आप महसूस भी कर सकते हैं। पूरा शरीर सांस ले रहा है। Keep breathing, becoming more and more the body. When you totally become the body, you may feel as if the body is taking the breath somewhere from solar plexus, and that happens because the diaphragm is automatically engaged. But in reality, not only the diaphragm, the chakras become one with this circular breathing. So all of the lower chakras are taking the breath. If you watch with awareness, the whole body, the whole skin is taking the breath. You can feel a little sensation of this. And even deeper, breath will become very shallow as the energy keeps increasing and relaxation is mixing with energy. जैसे जैसे शरीर बनते जाएंगे, पूरी तरह से सांसें बन जाएंगे, तो सांसें और भी कम एनर्जी बनते जाएंगे।
energizing, relaxing, एक होता जा रहा है. एक छोटा सा मंत्र सुनेंगे. We will listen to a very short mantra. सांसों में बने रहिए. Become the breath. Witnessing is happening of the breath. And stay in the breath as we go over some of the wisdom. So we'll connect with Mataji, Mahavatar Babaji, and Parvati Ma, Lakshmi Ma, Saraswati Ma. सांसों में बने रहिए और अब थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे जो मॉर्निंग सेशन, सुबह के सेशन से भी कनेक्टेड है. तो माँ अवतार बाबा जी, माता जी, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ के साथ जुड़कर इस ज्ञान को महसूस करेंगे. So in the morning, we were shown this lady who had this energy in her which
seemed like black smoke. The whole aura had that smoke. And she was carrying so much weight. And her husband could see the aura. And whenever he would see that aura, he would go away in one side. So, our emotional body, if it's active, if we don't breathe as much, an emotional body is active, the whole world can see it. Even if you don't want to show it, minute expressions on your face, just the feeling of the energy, your body language, and psychically people can feel it. So many of us think that we can hide our emotions. We're hiding them not only from the world we're trying, but also from our own self. We're pretending as if these emotions don't exist. We can cover them up. And that's never true. The whole world can see our face. Sometimes when we look at ourselves in the mirror, we like to look good, so we may smile in the mirror, or we may look at us in a different way. We never see ourselves in the mirror as we are emoting. When we're in some emotion or frustrated, we don't have a mirror to see how we look when we are frustrated. If we come to the mirror, we'll smile or something will do. The frustration energy will be hidden. So many times we never see the energy that we are projecting. But the whole world sees it, the whole world is affected by it. Especially all the living things. If you have plants in your room, they'll feel your energy. If you're making food, food will instantly absorb all the energy as you're making food. So we're like energy transmitters. Through our energy, we are announcing to the world who we are. Nobody needs an introduction. Your energy speaks for itself. People don't realize how transparent it is. Everybody can sense your energy. Most people can. तो सुबह अपन बात कर रहे थे एक लेडी की जिनके अंदर ये एनर्जी थी, ब्लैक स्मोक था, थोड़ा गुस्से की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, और उनके हस्बैंड ने उनको देखा और दूसरी दिशा में चल पड़े। और हमें कई बार लगता है कि हम अपनी भावनाएं के ऊपर कवर लगा देते हैं, अपने आप से छुपा लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि
कोई देख नहीं पा रहा कि हम क्या फील कर रहे हैं, मगर हम बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। सारी दुनिया को महसूस होता है एक लेवल पे कि क्या एनर्जी लेकर आप चल रहे हैं। ये इमोशनल एनर्जी बहुत साफ दिखती है, जो देख पाते हैं। कई तरह से दिखती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, छोटे छोटे चेहरे पे एक्सप्रेशन, जो हमें मालूम भी नहीं कि है वो एक्सप्रेशन। हम सोचते हैं हम नॉर्मल लग रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं दुनिया को। और फिर तीसरा, आपकी जो एनर्जी जो महसूस कर सकते हैं लोग साइकिकली ऑरा में, और इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर लोग महसूस कर सकते हैं। तो हम जैसे कि एक ट्रांसमीटर हैं एनर्जी के। एनर्जी चल रही है, हम केवल सोच रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं पा रहा। सारी दुनिया हमारी एनर्जी को महसूस कर सकती है, और ये एनर्जी स्पेशली जो लिविंग चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, इनको सब महसूस कर सकते हैं। ये खाना बनाएंगे तो सारी एनर्जी उसमें चले जाएगी। खाना उस एनर्जी का बन रहा है। तो सवाल है कि ये एनर्जी लेकर हम क्यों घूमते हैं। अभी आप जानवरों को देखेंगे, पक्षियों को, अपने डॉग को ही देखेंगे, कैसे वो कुछ भी हो रहा हो हमेशा प्यार की एनर्जी दिखाते हैं, जो सच में होती है उनमें, क्योंकि उनमें दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, और जो इमोशन होते हैं वो उसी वक्त रिलीज कर देते हैं बॉडी मूवमेंट से। ये नेचर में है सिस्टम। हमें सिविलाइज होने से सिखाया गया है कि शरीर को एकदम हिला नहीं सकते एनर्जी निकालने के लिए। सिविलाइज रूप में रहते हैं, और इमोशंस एक्सप्रेस करना बचपन से सिखाया नहीं जाता। उनको हम छुपाना सीख जाते हैं, और छुपाते छुपाते उसकी लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। एनर्जी जमा होना शुरू हो जाती है बॉडी में। जितनी जमा होती है, फिर वो एनर्जी से उसी तरह की एनर्जी और आने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। उसी तरह के विचार आने लगेंगे, उसी तरह की एनर्जी। जैसे कि एक होता है ना स्नोबॉल, छोटी से बर्फ का गोला होता है, उसको आप रोल करते जाएं तो वो बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। तो एक बार रिलीज नहीं करी इमोशनल एनर्जी, उसको छुपा लिया, तो वो गांठ और बड़ी बनने लगती है, बड़ी बनने लगती है। और कैसे आज जो सुबह प्रोसेस दिखाया गया था, इसमें ये ब्लैक स्मोक हर जगह चले जाता है। सारे ऑरा में। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि अपनी इमोशनल एनर्जी को आप पहचानें। अगर उसी एनर्जी में आप रोज जी रहे हैं, तो आपको ये देखने की शक्ति भी नहीं रहती कि
मैं किस एनर्जी में हूँ, क्योंकि आप उसी में हैं हमेशा। आपको लगता है मैं नॉर्मल हूँ, कोई देख नहीं रहा मुझे, मेरे में तो कोई टेंशन नहीं है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या थोड़ा महसूस हो रहा होगा टेंशन, मगर ये नहीं जान पाते कि कितना टेंशन है, कितना ये ब्लैक स्मोक भरा है, कितना गुस्सा भरा है। आप सोचते हैं थोड़ा सा होगा, बहुत भरा हुआ है, बहुत कचरा रहता है इमोशनल। केवल आप उसके आदी हो जाते हैं तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है ये कचरा। So all of us have these emotions. Like animals, we don't learn to release. And then once they get rooted in, then the law of attraction begins. The same energy will attract more energy of that kind. If you are generally an angry person, then more angry energy will come to you. It's like a snowball. You roll the snowball, it accumulates more snow, becomes a bigger ball. If you've not processed these energies, they will tend to expand in you. They'll become bigger and bigger. When they become bigger, we get used to them. As we get used to them, we don't realize how we used to feel when we didn't have these energies, because this becomes our normal existence. Some people are always stressed, so they think it's normal. I'm not stressed. If you ask them, they'll say, I'm not stressed, but they are stressed. It's just that they're always in that state, so they have stopped recognizing that they have this much stress. Some people are so angry all the time, and you ask them, you tell them you're so angry, they'll say, no, I'm not so angry, just every now and then I get angry. I'm not so angry, but they're angry all the time. We stop recognizing our emotional field because we are in it. And this emotional field will attract similar thoughts, similar situations, similar more energy. That's what law of attraction means. Energy is what will attract similar energy. If you are frustrated that you can never make enough money, then energy is of frustration. It has to attract more frustration. So that increases the chance of you making no money because you're frustrated. So, what can be done? What can be done is you have to deeply look inside and begin to see this black smoke, this big emotional field. You live in an emotional field. What is this field? What am I living in? Am I sad most of the time? Am I angry most of the time? What is this energy transmission I'm doing most of the time? And the signs are there because people may not want to talk to you. They hide from you, then you know there's some energy issue.
you genuinely are smiling from inside, you become the most beautiful person. People will be attracted to you. It's not the outer beauty, it's the inner smile. If you carry that, you know it because people connect with you in that way. So, the energy field we carry creates much of our existence, who we are, because we'll attract the same kind of thoughts, same kind of emotions, same kind of situations, same energy again and again and again. It's like hiding this energy and carrying it. You're building this foundation for your life. If you're most of the time frustrated, you're building a mountain of frustration that will become your life. Because that's what you're building. A builder builds a building, you are building frustration. So that will grow. So unknowingly, you are creating a life with an emotional energy print, which is who you are. And that you think is not visible because you hide it. I am so rich. I'm so successful. I have a doctorate. All this is hiding, telling yourself about your achievements or your big house or your lifestyle, anything like this. That's not important. What is important is how you feel. So ask yourself, how do I feel? Do I feel happy? Am I really happy? Or am I carrying some emotional energy field? It could be sadness, could be depressed, it could be anger, could be frustration, could be just fear. But we are carrying this energy field, which is our black smoke, which affects everything around us, which is the foundation of our life. तो ये जो इमोशनल एनर्जी है, भावनात्मक ऊर्जा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी बनाती है. जो आप हाइड करते गए, छुपाते गए, वो बढ़ती जाती है. गुस्सा छुपाते जाओगे तो स्नोबॉल की जैसे और बढ़ता जाएगा, वो गांठ बड़ी होती जाएगी. फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस है तो वो भी बढ़ता जाएगा. जो भी आपकी इमोशनल एनर्जी है, उसका कोई रिलीज का मैकेनिज्म नहीं है, तो वो बढ़ेगी आपके जीवन में. उस एनर्जी से उसी तरह के विचार आएंगे, उसी तरह के सिचुएशंस बनेंगी, उसी तरह की धारणाएं बनेंगी. वो उसी एनर्जी को और आपकी लाइफ में लाएंगी, फिर उसी तरह की और विचार बनेंगे. इसी को स्नोबॉल कहते हैं. वो बढ़ने लगेगा. आप उस एनर्जी, उस ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा का एक पहाड़ बना रहे हैं. खाली एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है जान के, आप अनजाने में ही वो पहाड़ बनाते जा रहे हैं. जो बनते जा रहा है, आप हैं उसको बनाने वाले. फिर उसको आप छुपा देते हैं. आप एक्सटर्नल मार्कर्स ले आते हैं.
मैं तो इतनी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, या बड़ा घर है, या मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कुछ भी जो उसको छुपा देगा आपकी एनर्जी फील्ड को। अपने आप को आप कन्विंस कर रहे हैं कि ये एनर्जी से मुझे जूझना नहीं पड़ रहा, मगर आप जानते हैं एक इमोशनल एनर्जी फील्ड है आप में। जब तक उसको आप देखेंगे नहीं, वो इमोशनल एनर्जी जो आपका ब्लैक स्मोक है वो बढ़ता ही जाएगा। छोटा कैसे होगा? जब आप उस पर काम नहीं कर रहे, उसको छुपा रहे हैं, जीवन वही है, तो वो तो और बड़ा पहाड़ बन जाएगा। तो ये पूरी जिंदगी आपकी उस इमोशनल एनर्जी के इम्प्रिंट से बनती जाएगी, बनती जाएगी। फिर लास्ट में क्या होगा? कोई ना कोई शॉक लगेगा, भले ही हेल्थ का शौक हो, या कोई डाइवोर्स हो गया, या कोई बिजनेस चौपट हो गया, कुछ होगा जिससे पूरा आपको वो हिला देगा, और फिर आपको उस एनर्जी से डील करना ही होगा। तो ये जो हमारा इम्प्रिंट है, इमोशनल एनर्जी इम्प्रिंट, इसको हमें जानना होगा। हम कौन हैं? ये हमारी शैडो है, या शैडो और भी गहरी होती है, मगर कम से कम हम इसे जाने, हम कौन हैं, हमारा ब्लैक स्मोक क्या है, उसको छुपाना नहीं है। तो यही डिस्कशन सुबह आज हो रहा था कि ये जब बढ़ते जाएगा तो ये सब जगह जाएगा। तो क्या करेंगे आप? इसीलिए सांसें लेते रहें। एनर्जी का एनर्जी से समाधान होगा। सांसों को गोले में लेते रहें, रोज देवी क्रिया करें, तो एक रास्ता बनेगा। सांसें आपको अपने शरीर से जोड़ती हैं, और ये इमोशनल एनर्जी है, माइंड एनर्जी है, ये शरीर में पिघल जाती है। शरीर एक ब्रह्मांड जितना बड़ा है, इसमें माइंड को पिघलाया जा सकता है, मगर शरीर का अनुभव करेंगे तो ही तो ये रिसोर्स अवेलेबल है। वो अनुभव तभी होगा जब सांसों में आएंगे। सांसों में आते जाने से पहले पहले ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि सांसों से आपको दिखने लगेगा, अरे मेरे में तो इतना गुस्सा भरा है, यहाँ दर्द होता है, क्योंकि सांसें लेंगे तो रोशनी जाएगी जहाँ पर ये सब छुपाया हुआ है, और उससे थोड़ा और पेन उठेगा। तो कई लोग फिर सांस लेते ही नहीं है उस तरह से। मगर हमें उन सांसों में जाना है, उन चक्रों में जाना है जहाँ ये सब स्टोर किया हुआ है, ये सब कचरा भरा हुआ है। सांसों के द्वारा वहाँ जाना है,
और रोज प्रैक्टिस करेंगे सांसों की तो रोज हल्का हल्का कचरा कम होगा। तो ये है हमारा जो इमोशनल बॉडी को फिजिकल बॉडी में हम मेल्ट कर सकते हैं। और माइंड, बॉडी, फिजिकल बॉडी, फिर सोल, आत्म भावनाएं, अकारण प्यार, अकारण खुशी, प्रिमोडियल जॉय, लव, सारी जो भावनाएं हैं, करुणा, कृतज्ञता, आज़ादी, शांति, इनसे हम अपनी आत्मा को जानेंगे। इन भावनाओं में रहने की प्रैक्टिस करेंगे। माफ़ करने की प्रैक्टिस, माफ़ी मांगना, ईगो डिसॉल्व करना, इन भावनाओं में आना, उससे भी हेल्प होगी। जैसे सरस्वती माँ ने लेवल्स बनाए हैं, माइंड, बॉडी, सोल, तो सोल में सोल फीलिंग्स, फिर हायर सेल्फ, महाअवतार बाबा जी हायर सेल्फ का ही रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारी पूर्ण आत्मा है। कई मास्टर्स जुड़ते हैं सुबह, माता जी, क्वानिन माँ, वो भी हेल्प कर रही हैं। तो ये सारे हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो माइंड के ऊपर हैं, इमोशनल बॉडी के ऊपर हैं, सांसों से शुरू करना है, शरीर में डिसॉल्व होगा ये सब, फिर आत्मा में, फिर हायर सेल्फ में, डिवाइन बीइंग्स के द्वारा। तो अब मैं इसको बस इंग्लिश में कंप्लीट करता हूँ, फिर अपना सेशन ख़त्म करेंगे, 10 बज गए हैं। So we are this emotional energy field, this black smoke walking around. What can we do? As Saraswati ji says in Thousand Seeds of Joy, there are levels of consciousness. This is your mind. Mind has emotions, thoughts, ego. All of this is mind. All of this is the iceberg. This can be melted in the lakes. The lake is your body. So get into breathing and keep breathing in circles. Do Devi Kriya. These breath processes will start dissolving this emotional field. Initially, it might feel uncomfortable. You may not even be able to breathe, because as you begin to breathe into these emotions, you'll feel even more discomfort. You'll feel the body pain, because you're shining light and now you can feel your stuff. You can feel the emotional pain. But you must go through this with the breath. Breathe in different chakras, find out where the discomfort is. As you do that, some of this emotional field will start dissolving, the traumas will start dissolving. The energy has to be dealt with energy. Your emotional energy cannot be dissolved by thinking. You cannot think out of your emotional field. You can't say, I'll be a good person, I will not be angry. No. Tomorrow also you'll be angry if anger has come and created a place in your body. You have to breathe. You have to add this energy, physical energy. Through the breath, the soul also starts coming in. It opens the door to the soul, which is even a higher level of consciousness. If body is the lake, soul is the ocean. Soul has soul feelings, primordial joy, unconditional love, infinite compassion, peace, freedom, gratitude, lot of forgiveness.
infinite forgiveness. When you don't breathe, you don't feel any joy, you don't even want to invite these soul feelings. The mind just wants to chew on itself, stay in the emotions and the ego and the emotions and the ego, and the cycle continues. The way to break it is start breathing different breath processes that opens, that starts dissolving the emotions. Plus, it opens up the soul. Soul feelings start coming in. You start feeling the joy. You start feeling you can forgive. So, invite all these soul feelings. And some of you don't want to, but then breathe more. Breath processes will take you deeper into the soul. Once the soul starts opening, higher beings, your higher self, your devotion to divine beings, inviting them in. In the morning, so many masters come with Mahavatar, Babaji, Mataji, all the gods, goddesses, Buddhas, they're all helping, cleaning your chakras. So much service they're doing, they're ready to help you. But you have to take the first step. Begin with breathing. Open to your soul, and then the divine beings can help. We were shown one session in which a lady was praying to Hanuman, and then the whole session was on how the son got healed. Son didn't even realize, but that prayer manifested the work from Hanumanji who healed him. So our prayers also will reach out to the divine beings. And this way you can heal your emotional field, the black smoke. Because we talked in the morning about how she goes in the shower and the aura gets cleaned, which is true. Because she was opening up to some way to clean herself. And at the same time, these methods of breathing, getting into the body, into the soul, soul feelings, and divine beings, all of this can be a multi-dimensional way of healing your emotional body. So we can talk more, but it's 10:10, so we will end it here today. Keep breathing in. Hopefully this wisdom went a bit deep as you were breathing. The main lesson was that you are very transparent. Your emotional field is seen by everybody, and you are creating a bigger mountain of that emotional, energetic field if you don't heal yourself. And that is what your life will be. So very important to begin the healing. तो अब यहीं पे सेशन बंद करते हैं. मेन जो विजडम थी वो यही है कि आपकी जो इमोशनल फील्ड है काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, सब देखते हैं, वो ही आपकी लाइफ बन जाती है, वो ही आपका पहाड़ बन जाता है, उसी में आप जीवन जिएंगे. नहीं जीना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सांसों के द्वारा चेंज लाना है, शरीर में जाना है. शरीर की एनर्जी मेल्ट करेगी इमोशंस को, फिर उधर से आत्मा की एनर्जीज, आत्म भावनाएं आने लगेंगी, प्यार उमड़ने लगेगा, खुशी आने लगेगी, माफ करने लगेंगे, क्षमा याचना आ जाएगी. ये सब आना जरूरी है. और फिर
सारे डिवाइन बीइंग्स हैं वो कितनी हेल्प कर रहे हैं। आप एक कदम बढ़िए, वो 10 कदम आपकी तरफ आ रहे हैं, मगर बढ़ना आपको है। सो अपने शरीर में आ जाइए। पूरे शरीर, सांसों और शरीर से ही शुरू होगा ये सब। केवल ये बोलेंगे कि कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, उससे कुछ नहीं होगा। गुस्सा तो जो बड़ा है वो बड़ा है, वो आएगा ही। तो ये जो सांसें हैं, शरीर है, इनको बहुत धन्यवाद दीजिए। हाथों को पूरे शरीर पर लगाइए, क्राउन से फीट तक। वापस फीट से ले आइए, पैरों से थाइज, बैक, चेस्ट, क्राउन तक। So this body and breath are your friends. You cannot say tomorrow I will not be angry, because if it was so easy, everybody would be not angry. You have to surrender to breathing and your body and then soul, divine beings. So thank your body. Touch from your crown all the way to your feet. Touch every part of the body and then back. Slowly, all the way from your legs to thighs to back to chest, back to your crown. And with a smile that you can do this, आप ये कर सकते हैं, पूरी इमोशनल फील्ड को डिसॉल्व कर सकते हैं, एक अनंत खुशी में रह सकते हैं। You can do this, you can dissolve your emotional field. So with that smile that you can do this, you can become primordial joy, you can have infinity in your life. With that, we will take our hands on our eyes, हाथों को अपने चेहरे पर ले जाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can open your eyes. आंखें खोल सकते हैं। So we made some progress. We did it in 1 hour 15 minutes. Let's see if we can keep to 1 hour or little bit less tomorrow. Chaliye Masters, thank you. Thank you to the divine beings, Maftar Babaji, Mataji, Parvati Ma, Lakshmi Ma, Saraswati Ma. सबको धन्यवाद करते हुए मीटिंग बंद करते हैं। कुछ कहना है किसी को या everything good? Okay. We'll close the meeting now. See you tomorrow morning. Okay. Great. Okay, I'll close the meeting. Meeting बंद कर रहे हैं. Have a good night. शुभ रात्रि. कल मिलेंगे.